20 roles एज ए हॉस्पिटल लीडर। तो यहां पे रोल मतलब ये कोई डेजिग्नेशन नहीं है। Welcome back. In our continuous seminar on hospital management beyond textbook, we have already covered 18 sectors in healthcare industry. We have covered different law, ethics, registration, licenses required for the hospital from a practical aspect, how you need to think for different licensing and statutory part while managing a hospital project or managing hospital as such as a manager. Next part is 20 roles as a hospital leader. So you may be working tomorrow as an executive, as a manager, as an administrator, as a quality manager, or maybe coordinator, or CEO, center head, facility manager. Let's say there are different professional roles as you climb, as you go further and further in your career ladder, right? But every leader in a hospital, who do you think all are leader? Anyone? क्या लीडर की क्या डेफिनेशन होगी? अभी हम राइट नाउ वी विल कवर 20 रोल्स एज ए हॉस्पिटल लीडर। पहले तो इसको समझते हैं, वो टू वोम यू कंसीडर अ लीडर इन हॉस्पिटल। सीईओ, सीओओ, सीआईओ मतलब एक मिनट इनको समझना पड़ेगा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीआईओ मतलब चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ओके। फिर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, सीओओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, सीएफओ। फिर और कौन हॉस्पिटल में लीडर्स होंगे? जनरल मैनेजर, प्लांट मैनेजर, फैसिलिटी मैनेजर, शिफ्ट सुपरवाइजर, डिपार्टमेंट हेड, इंचार्ज, डिपार्टमेंट इंचार्जेस, राइट। फिर हेड ऑफ नर्सिंग, मैनेजर ऑपरेशंस, हॉस्पिटल मैनेजर और सुपरिटेंडेंट, फ्लोर कोऑर्डिनेटर। फिर सीनियर टेक्नीशियन जो टीम मैनेज कर रहे हैं पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, राइट। सो बेसिकली hospital leader, it doesn't mean only CEO, center head or COO, right? It is also a department in charge or a team leader or a manager or an administrator who are managing a particular department or managing maybe a small team or a larger team, but he is a leader. So there are many roles as a leader he need to perform, he is being expected to perform. तो क्या है वो 20 roles? Start, let us start. तो यहां पे रोल मतलब ये कोई डेजिग्नेशन नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल our first role is planner. मतलब being a leader, he need to perform a role of planner, right? As a planner, आप क्या करोगे? If you are working as a hospital administrator, तो in your role, in your duties,
there are things where you need to plan better, right? तो प्लानर की क्वालिटी क्या होती है? वो आप में होनी चाहिए डेफिनेटली, राइट? एज ए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर आपको मे बी डिपार्टमेंट का मैन पावर प्लान करना है. Maybe you've been told that we are going to expand this department, now plan your resources, right? So you need to plan your manpower, resources, maybe equipment, instrument, anything, money wise. How will you plan? So you need to be prepared for that planning aspect. You need to sit together with all the team members and you need to identify which all are resources, materials and new team member we will require. So you accordingly you will plan your this project. Maybe you've been working in a healthcare consultancy where you get a hospital project. So you are also as a planner you are working there, right? And tomorrow for that particular hospital only you will be recruiting the manpower as a part of consultancy work. So there your role will be as a recruiter, if you are recruiting for the recruiter, right? So that way now think different roles. We need to reach up to 20 again. So second मैंने अभी बताया recruiter. आप recruiter is also a role, right? Yes or no? कैसे? Let me explain. भले ही आप HR डिपार्टमेंट में नहीं है, you are not working in a HR department. HR department person is a recruiter, but as a executive hospital administration, as a hospital manager or as a administrator, you've been asked to take an interview. So इसको अल्टरनेटिव आप इंटरव्यूअर रोल में तो आप हो ही, आप किसी भी पोजीशन पे हो, वेदर यू मैट बी अ सीईओ, यू बीन आस्क्ड टू take an interview or you need to meet, you need to, if you are recruiting a doctor, if you are recruiting a manager, you need to take an interview. If you are no, so you need to build that quality of interviewer or a recruiter. What things you will evaluate, how will you interact with a person, because you are going to decide at the end of the interaction whether this person is right for my work, my organization or not, whether his skill is matched with the requirement of my hospital or not. Are you getting me? So at that time you are performing as a interviewer or a recruiter role. So you need to develop that skills of interviewer. No matter we have done MBA, MHM or diploma, hospital management or administration, you've been asked to take an interview and decide whether this person is suitable for me or not. Now, third, anything from suggestion? और ऐसा कौन सा रोल है? यहाँ पे आपको अगेन डेजिग्नेशन के बारे में नहीं सोचना है. What else you can imagine in during the hospital management, this could be the role or this kind of situation I have to be perform a duty of particular role. आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं? समझे? You can ask if you have any confusion, you can ask, क्योंकि next we have to reach to up to 20 और आपको ही बताना है. Organizer, right? Good.
You have to be an organizer. What else, what things you need to organize as a hospital manager or a leader in hospital? What all are different things where staffing means? Okay, training sessions you need to organize. Fine. Then decision maker is a one role. But here things you need to, you might be organizing a workshop, you might be organizing a conference on behalf of your hospital, you might be organizing NABH accreditation team committee has come and you have inaugural meeting, you need to organize things. Right now someone has, I think Dr. Kinjal Jani has organized the or Dr. KK Patel and Dr. Sushman and the other faculties have organized this seminar, right? So there are things in and out you need to take care, which might not be in your textbook, but you need to take care whatever the requirement is. Decision maker, fourth, good. Decision maker कौन सी situation में होगा? First, what things you be careful while performing a decision maker role? What things you need to take care? क्या पता होना चाहिए? अल्टीमेटली डिसीजन लेना है तो डिसीजन तो बहुत सारे हैं. मुझे यहाँ से अहमदाबाद जाना है, वो भी डिसीजन में नहीं लेना है. और you need to take a decision that whether we should plan hospital expansion or not, whether you need to take a decision what could be the next year budget for the manpower, what could be the budget for the purchase and other new things or materials. There are so many decisions on hospital manager's desk or a CEO's desk, right? So how will what things you need to keep in mind? There are basic skills you need to develop. So see, there are few things where you should think that you should be taken care while being as a decision maker. One thing is you must be aware about the ground reality. So before making any decision, ensure that you know about the ground reality. मतलब कि एक ऑफिस में बैठ के लैपटॉप की 2x2 स्क्रीन पे एक्सेल शीट में एनालिसिस करके मैं सारे डिसीजन नहीं ले सकता, राइट? आई नीड टू बी कनेक्ट विथ my nursing staff, my housekeeping staff, or the person who is working on the floor. What जहां से भी रिक्वायरमेंट है यार, जिस डिपार्टमेंट के लिए आप डिसीजन ले रहे हो, do you know all the dynamics in and out about the department? You may be taking a decision for the policy changing. You may be taking a decision for new workplace for that particular department. You are changing the department. You might be because your decision is going to make impact on your team's motivation, team's work environment, their efficiency, department productivity, etc. There are multiple things and multiple situations also where you need to consider different things. So before taking any decision, is like in earlier session we were discussing the purchase, right? That's the ideal situation of decision. Before taking any purchase decision, what we have discussed, I'll visit to that department, what exactly the requirement, I will understand, I will evaluate
different aspect surrounding that situation, and then I will decide, okay, let me know. If you need to get a reference from outside in your resources, okay, let me ask my friend, he is working in other hospital, he might have purchased this equipment or kind of things, let me get the reference so I can validate my decision whether I'm going right, wrong, etc. Right? Okay. Any other role? Huh? Huh? Team leader. Team leader is one of the role. So देखो ये हॉस्पिटल लीडर के ही रोल है. तो एनीवेज being a team leader, he need to be a very good team player also. Otherwise, he will not justify his leadership, right? Team builder can be, you are here, you are building a team, and also you are leading your team, being a team player, right? Good. Next, coordinator. Okay, good. Coordinator, communicator. Coordinator, communicator. These things are, see, being a communicator, there are skills. What all are skills you need required as a coordinator or a communicator? See, good skill is which, you know, which you need to develop, you has to develop, and you have to develop that uh, email writing, which is quite different what you are currently writing an email to your friends, family, etc. While working in a corporate hospital, it is very different aspect in terms of email. See, as a communicator, what you are doing, how you communicate to different person. It may be a internal, it may be a external. External means you are communicating with government officials, some government department, uh, engineer, agency, etc. The person who are going to give you the permissions, etc. Maybe you are going to communicate with the ministry or any another company's higher authority, etc. How will you write an email or about matter? Maybe you are sending an email of uh, lack of service to one particular company's higher authority. So while email writing is an again art, आप एक ईमेल में कैसे उसको सिचुएशन भी समझाओगे, उससे कन्विंस भी करवाना है, मतलब उसको एक अपना कंसर्न रेज करना है along with using the appropriate language, right? So that skill, writing skills. As a communicator, you should be very effective in your every communication, writing, verbal communication. You see, this each roles, it has already covered separate video on Docthub YouTube channel. I think we have reached to 8th or 9th of role. So wherein detail different aspect
we have covered, because here in this seminar, if we covered all these aspects, it go long, and you know, so you can definitely go further and get a reference in detail to understand different practical aspect of in that particular role. Now, next, yes, right, influencer. You are acting as an influencer to whom? To whom? To whom you are influencing? Huh? Yeah, being a, suppose you are hospital manager, right? And you are performing a role of influencer. Influencer means person is influencing to someone. So being a hospital manager, to whom you are influencing? Subordinates, your team member. You are influencing your team member by giving them a positive aspect of work, motivating them, understanding their concerns, solving their problems. You are influencing them. Why someone want to work in your team? Unless you influence them to work with you, and along with to achieve a common goal, target of the particular department, unless they will not be motivated to work with you. Also in a community, while working as a hospital manager, you are also influencing in a community, in a society. See, hospital professional always looked at as a mature person. In your community, you are living in a particular society or particular community. People expect you some help at the time of any kind of health emergencies. In your social functions gathering, they will try to interact with you. Okay, what is the what happened in such kind of surgery, in such kind of emergency, how should or which hospital I should approach, hospital में ये process कैसे होता है, या ये government scheme में हमारा ये problem हो गया, what how things. So while interacting with them, you are again influencing the people. While you are solving their query in that particular society or community, you are being as a influencer कि अच्छा ये सो एंड सो पर्सन वो इस हॉस्पिटल में मैनेजर है, उसने मुझे बोला था, ही इज अ वेरी गुड पर्सन, ही हेल्प अस और ही हेल्प आवर कम्युनिटी वेरी वेल वगैरह. तो वो एक कम्युनिटी में भी आप उस तरह से रोल परफॉर्म करते हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली. आर यू गेटिंग मी? राइट. Okay, next role, advisor. Okay, good. As a advisor, what advice you might need to give during your job? In your job, you are advising to your subordinates. You might be while attending a business meeting or committee meetings, you might be asked to advise on particular situation. If you are a hospital operations manager and there is some safety committee or a medical audit committee is going on, might be some situation happen, or might be there are discussion of one particular incident, where incident might be patient fall from stretcher. You have been asked to advise what need to do or how we can prevent in future such kind of things. So where you in that situation you are performing as a advisory role, and also at the end of that conversion you are also performing, you will be also, another role is executor, because whatever things you have advised, you need to execute on ground level, or you need to make sure executor, right? पॉलिसी बन गई है, उसको एग्जीक्यूट तो करना है,
right? So your role is as an executor also. And while executing a particular policy, executing particular SOP, there are challenges. And most commonly एग्जीक्यूशन पार्ट में एसओपी आएगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। क्वालिटी मैनेजमेंट की जो बुक है, टेक्स्ट बुक में आपको ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट देयर आर सो मेनी एसओपीज, राइट? एसओपी बना ली, चलो एसओपी तो बनानी है आपको, बना लिया आपने, नाउ यू नीड टू एग्जीक्यूट दैट एसओपी। अब कौन से, देयर आर डिफरेंट सिचुएशन, में एक दो एग्जांपल देता हूं। In my previous experience in a hospital, when I joined as a CEO, we were trying to implement performance evaluation policy, SOP. Yeah, how we can perform. There are many nursing staff, technicians, etc. So how can I perform? Person one is, how can I evaluate the person one is performing well as compared to person two, right? Because end of the year you need to decide what the salary increment and as per the performance evaluation rather than fix increment, right? In government system there is a fixed increment system, but in private sector it is based on your performance and outcome. But how will you measure that performance? And for that, I have tried one particular SOP. We have decided certain parameters, some processes that all the department in charge will have a particular sheet wherein on a regular basis or during their work entire year, they will measure a parameter. So it will measure the good performance, as well as there are some training where the person is lacking, it should be identified, or some kind of missing of their duty. If person has missed his duty or responsibility, that also will be recorded, right? Fair enough, I think process clear है, आपको पैरामीटर जो दिए हैं और उसमें आपको थोड़ा मेजर और प्रिसाइज करना है, इंचार्जेस को हमने ट्रेन किया, बट जब वो उसको एग्जीक्यूट किया एंड देन आफ्टर अ फ्यू वीक्स व्हेन आई रिव्यू ऑन ग्राउंड, I came into I got the reviews, or I have observed that some of the in charge is using it as a weapon, maybe. No, they understand in a way that this is a controlling पॉलिसी, कि अगर कोई आपका सबऑर्डिनेट आपको मना कर रहा है या कोई वो उसको डराना नहीं है कि हे डोंट डू दिस अदरवाइज आई विल पुट अ रिमार्क्स, you understand? So the SOP which was initiated with a good intention, but ultimately maybe people take it differently and they will implement with a different sense, or what they are communicating to that team is not in your hand. तो आपको वो उसको रिव्यू भी करना है और उसको करेक्ट करना पड़ेगा टाइम टू टाइम, अगेन एंड अगेन, कि नो दिस इज नॉट दिस वे, यू हैव टू एग्जीक्यूट दैट वे ओनली विच हैज बीन एक्सप्लेन्ड। उसमें आपको इंस्ट्रक्शंस भी देनी होगी कि ये वर्ड्स इसको इस सेंस में नहीं करना है, इसको इसी तरह से एग्जीक्यूट करना है, कि आपको फॉल्ट फाइंडिंग, ये केस में क्या हुआ कि इट वाज इनिशिएटेड विथ अ गुड इंटेंशन ऑफ evaluating a performance and identifying the training areas of particular person, and we can
focus on that areas to build or to improve the skills of that person, and ultimately when it is executed, it came as a fault finding tool. You understand? मतलब जो सेंस इनिशिएशन था वो बिल्कुल चेंज हो गया जब ग्राउंड लेवल पे आया था. तो ऐसे हर एवरी एसओपी, एवरी प्रोसेसेस, you may find such kind of gaps. By preparing an SOP in a laptop or in a computer and you have circulated the document, don't expect that the system and the people will start next day working on that SOP. And it is not only for the small hospitals and all, it applies everywhere. You are in a corporate hospital or a government system or a trust hospital or private system or कोई वैसे ऐसा नहीं है कि कोई बिग कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है तो वहां पे एसओपी फॉलो हो जाएगी 100%, और प्राइवेट हॉस्पिटल स्मॉल 50 बेडेड है किसी सिटी में तो वहां पे नहीं होगी. दैट इज नॉट अ केस. इवन क्वालिटी इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. यू might have heard, right? So I hope that this is the very good practical aspect. You will definitely observe while you are doing your internship and after completing your course. You will connect this part while practicing on ground, definitely. Then next कुछ role, policy maker. Yes, पॉलिसी मेकर. तो एक पार्ट तो उसमें हमने अभी रिसेंटली कवर कर ही दिया. यू आर मेकिंग अ पॉलिसी, बट यस, वन थिंग इज बिफोर मेकिंग पॉलिसी, पॉलिसी मेकर में आप मे बी एसओपी बना रहे हो या मैन्युअल्स बना रहे हो डिपार्टमेंट के. डोंट कॉपी पेस्ट. आई जस्ट एडवाइज कि कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी पॉलिसी या एसओपी, ट्राई टू नॉट कॉपी पेस्ट. यूजुअली क्या होता है, अच्छा ये नया हॉस्पिटल है, मुझे अपॉइंट किया है, एक काम करता हूँ मेरे फ्रेंड को कॉल करता हूँ, अरे यार तूने अभी रिसेंटली एनएबीएच किया है, तू मुझे ये पॉलिसी दे दे, वो पॉलिसी दे, या कुछ शेयर करेगा कैसे बनाते हैं पॉलिसी. कॉपी पेस्ट मिल जाएगा. डॉक्यूमेंट्स तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, टेम्पलेट्स भी मिल जाएंगे गूगल से कि ये इस टाइप की एसओपी, एडमिशन, डिस्चार्ज, डेथ, ये मेडिकल ऑडिट, कॉपी पेस्ट कर दिया. पर क्या उसके बाद क्या, यू ऑल्सो नीड टू इम्प्लीमेंट इट, ऑल्सो नीड टू सी कि ये तो जो पॉलिसी मैंने कॉपी पेस्ट की है, डॉक्यूमेंट बनाई, वो तो 200 बेड की हॉस्पिटल है या मेडिकल सेंटर है कहीं पे 500 बेड का, उसकी पॉलिसी है. मैं तो 50 बेड हॉस्पिटल में एज ए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर हूं. यहां पे मुझे क्या चाहिए, यू नीड टू फिगर इट आउट कि ओके रिक्वायरमेंट क्या है. कोई बड़ा सा 20 पेज का पॉलिसी डॉक्यूमेंट बना के अल्टीमेटली इट हैज नो यूज इफ प्रैक्टिकली अगर हम उसको इंप्लीमेंट नहीं करने वाले हैं, राइट. अननेसेसरी थिंग्स आई एम ट्राइंग टू मेक द पार्ट की डोंट गिव अननेसेसरी थिंग्स जो आपके सिस्टम को जरूरत नहीं है. वैसी पॉलिसीज या वैसे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है. आइडेंटिफाई क्या जरूरत, उसके अकॉर्डिंग अगर वो एसओपी सिंगल पेज में सिर्फ स्टेप 1 2 3 एक्सप्लेन कर देता है तो इट इज गुड, सिंपल एंड शॉर्ट एंड स्वीट. एडमिशन प्रोसेस स्टेप 1 ये 2 3 4 ये करना है, ये नहीं करना है, अल्टीमेटली तो यही है. फिर आप उसमें डिफरेंट लैंग्वेज कॉपी पेस्ट करके इंग्लिश के सेंटेंसेस बड़े बड़े और ये टाइटल और डायग्राम वगैरह करके उसको 10 पेज का करके, प्रैक्टिकली देयर इज नो यूज, क्योंकि आप जिसको भी कॉपी वो नर्सिंग स्टाफ या टेक्नीशियन को देने वाले हो, राइट. तो वो जिस तरह से समझे उस तरह से उसको प्रिपेयर कीजिए कोई भी डॉक्यूमेंट, दैट्स इट.
और हाँ, क्वालिटी में देयर इज ऑलवेज अ वेरी गुड फ्रेज, राइट व्हाट यू डू एंड डू व्हाट यू राइट, राइट। कभी आई थिंक कहीं ना कहीं आपने भी ये क्वालिटी मैनेजमेंट में सुना होगा। तो इसीलिए मैंने ये यहाँ से स्टार्ट किया कि डोंट डू कॉपी पेस्ट। जो प्रोसेस ग्राउंड लेवल पे चल रहा है तो उसी के बेस पे वो जो स्टेप्स है उसको आप एसओपी में कन्वर्ट करो, और जो एसओपी में स्टेप्स लिए हैं, लिखे हैं, वही एंश्योर करो कि प्रैक्टिकली उसी को फॉलो करें। अगर नहीं कर रहे हैं तो उसको एनीवेज एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन रिवाइज इट, कि अगर ये प्रोसेस में 10 स्टेप है, 2 स्टेप अननेसेसरी है तो निकाल दो भाई, उसको 8 स्टेप का ही एसओपी रखो। फिर एसओपी में 10 है और प्रैक्टिकली 8 स्टेप ही फॉलो हो रहे हैं, डजंट मेक एनी सेंस। आप उसको, राइट, ओके। उसके बाद ऑपरेटर, क्या उसमें वो एग्जीक्यूटर में से अलग होगा? एग्जीक्यूटर से अलग होगा? आप उसको एक्सप्लेन कीजिए मुझे। ऑपरेटर ने, ऑपरेटर तो ओके, व्हाट विल यू ऑपरेट, वो तो टेक्नीशियन, टेक्निकल रोल हो गया ना वो। एज ए हॉस्पिटल मैनेजर, पर बजट तो एक एक्टिविटी हो गई ना, रोल नहीं है। स्ट्रेटेजिस्ट, स्ट्रेटेजिस्ट एक रोल है। यू नीड टू प्रिपेयर अ स्ट्रेटेजी। फॉर एग्जाम्पल, अभी प्रीवियस सेशन में वी वर डिस्कसिंग hospital project and what all are statutory and law registrations required, right. Now imagine we are discussing here, now I want to build my hospital project के बारे में बात हो रही है, तो फॉर दैट यू नीड टू प्रिपेयर अ स्ट्रेटेजी ना। यहाँ पे आपने प्लानिंग कर लिया, प्लानिंग यहाँ पे कर लिया, प्लानिंग करने के बाद एज ए एग्जीक्यूटर आप एग्जीक्यूट भी करोगे, पर मैं एग्जीक्यूट कैसे करूं? हॉस्पिटल बनाने का डिसाइड हुआ तो मैं पहले ही दिन क्या सीटी स्कैन का मशीन ऑर्डर कर दूं क्या? वो भी एक एग्जीक्यूशन ही हुआ ना। पर मुझे स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी ना, कि ओके फर्स्ट 3 months आवर स्ट्रेटेजी इज हॉस्पिटल प्लान करना है, व्हाट ऑल आर फैसिलिटीज प्लान करना है। तो फर्स्ट 3 months वी विल बी वर्किंग ऑन दी hospital infrastructure or hospital blueprint, how the facilities will be, what all are facilities we will required. That's your strategy, phase 1 for 3 months. What will be your strategy for next 3 months? What will be your strategy for next third phase of 6 months? You will be do that. That's the strategy, कि फर्स्ट 3 months में हमारा फोकस यही होगा, हमें इतने रिसोर्सेज लगाने हैं और ये चीज अचीव करनी है। एट द एंड ऑफ एवरी स्ट्रेटेजी यू विल पुट योर गोल कि आफ्टर 3 months हमें हॉस्पिटल फैसिलिटी का ब्लूप्रिंट रेडी करना है, कौन कौन से डिपार्टमेंट चाहिए, कितने स्पेस में वगैरह में, आर्किटेक्ट से बैठ के, हॉस्पिटल प्लानर से बैठ के पूरा रिसोर्सेज का प्लानिंग कर लेना है, कितना बजट लगेगा, क्या लगेगा, वो सब पूरा 3 महीने में कंप्लीट करना है। दैट्स योर स्ट्रेटेजी।
So there you are acting as a strategist. So you need to think accordingly. ऐसा नहीं, यूजुअली क्या होता है, हॉस्पिटल प्लान करना है, बैठते हैं 4-5 लोग और स्टार्ट करते हैं, ओके एंड ऑफ द मीटिंग क्या हुआ, कुछ नहीं, नेक्स्ट वीक बैठेंगे, अरे ये हो गया, अरे हम इस तरह से टेरिफ रखेंगे, पर नो, फर्स्ट मीटिंग यू आर नॉट as a strategist, you need to hold all the people who are stakeholders, right? Asking them, first 3 months our focus is this, and we are not going to think about out of that particular part unnecessary things, because you will be wasting, you doing multiple meetings, but end of the day you are not reaching out anywhere because your strategy is not clear cut. कहाँ पे जाना है भाई, कब तक कंप्लीट करना है? आज हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, जब स्टार्ट किया तब स्ट्रेटेजी ही नहीं बनानी कि इसको 1 साल में कंप्लीट करना है, पर 1 साल में कंप्लीट कैसे होगा? 3 महीने में ये, 6 महीने में ये, नहीं हुआ तो क्या, कौन किसकी किस रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइंड है, नहीं है, राइट? यू अंडरस्टैंड हाउ द स्ट्रेटेजिस्ट थिंक एंड वर्क अकॉर्डिंगली. ओके, उसके बाद और रोल प्रॉब्लम सॉल्वर है, एक रोल ही है, पर वो ऑलरेडी हमारा, एक मिनट, कहीं पे ऑल, पर वो लीडर ही है ना, टीम लीडर, जो आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तभी तो आप लीडर हो. तो आई थिंक यस, हमने टीम लीडर 5th वाला कवर हो गया. नेक्स्ट एक है जो आई हैव आइडेंटिफाइड, ऑप्टिमिस्ट, अ वेरी गुड इंपॉर्टेंट रोल. इसका मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग? ऑप्टिमिस्ट मीन्स as a hospital manager you need to be optimistic. हाँ हाँ, वो एक एस्पेक्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, बट ऑप्टिमिस्ट और ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच इज डिफरेंट. दैट वो हो गया ऑप्टिमम, ऑप्टिमम resource utilization. Optimistic means kind of positive approach. I mean, as a hospital manager, you will get very different situations, crises, problems. But at that time, if you are not optimistic कि यस नहीं, इस सिचुएशन से निकला जा सकता है, हम ये चीज कर सकते हैं, 10 चीजें आप 1-on-1 ट्राई करते हो उस पर्टिकुलर क्राइसिस से निकलने के लिए. There are 2 type of personality. Person who is negatively thinking, वो किसी भी क्राइसिस और प्रॉब्लम को लेके बैठ जाएगा, अरे यार ये तो नहीं हो सकता. But you are leading a team, you are a hospital leader, you cannot say, आपका टीम मेंबर आया कि सर ये प्रॉब्लम हो गया है, पेशेंट की सर्विस या सर्जन नहीं आए हैं, या व्हाटएवर द क्राइसिस इज, पर आप उसको लेके बैठ तो नहीं जाओगे ना. You need to find 10 other ways to solve this problem. And unless you are optimistic, you cannot solve that problem, because if you see only problem, you will you will find difficulties to find the solution. You need to be optimistic, be positive about finding the solutions. There is a hope, there is any kind of a situation, there is always a way, but you need to find, you need to be positive about that, so that's the optimistic role. You need to be there as a optimist, be an optimist there in that situation. ठीक है, और
हाँ, पण ये क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन काइंड ऑफ एक्टिविटी हो गया ना। हाँ, एक में कर सकते हो। क्रिएटिविटी है, इनोवेटर थोड़ा कह सकते हैं उसको। ओके, एक्सप्लेन। आपका ही थॉट है तो आप उसको ज्यादा कहाँ है क्रिएटिविटी, कहाँ से है? हाँ, अच्छा, ओके। क्रिएटिव, इनोवेटर और मे बी कंटेंट राइटर। आप एक रोल फॉलो कर रहे हो यहाँ पे, कंटेंट राइटर। क्यों? एज ए हॉस्पिटल मैनेजर आपको कंटेंट राइटर या क्रिएटिव क्रिएटिव पर्सन का रोल क्यों, कहाँ पे, कौन सी सिचुएशन में करना है? व्हाट थिंग्स? Why do we need to develop a creative sense as a hospital leader? मैं इस तरह से पूछता हूँ। चलो, क्रिएटिव मतलब कोई ग्राफिक्स हो गया, वीडियो हो गया, या ईमेल हो गया, ब्लॉग्स हो गए, या कुछ भी कंटेंट है, उसमें आपको वो सेंस डेवलप करने की क्यों जरूरत है? व्हाई डू यू नीड? यू आर हॉस्पिटल मैनेजर, सीईओ और सीओ, क्यों आपको वो रोल या आपको वो स्किल जरूरी है? अभी मार्केटिंग हमने अगले सेशन में डिस्कस किया था, राइट? कि मार्केटिंग सब्जेक्ट है, राइट? तो सपोज आप एक सेंटर हेड हो, हॉस्पिटल मैनेजर हो या सीईओ हो, तो मार्केटिंग टीम आपके अंडर में ही है, और आप, और माइट बी यू हैव हायर्ड अ मार्केटिंग एजेंसी। वो आपको 10 तरीके के ऑप्शन देंगे। सर, न्यूज़पेपर में ऐड देना है, ये 3 4 5 ऑप्शन है सर, हमारी ये सर्विस है, उसका देना है। पर इफ यू आर नॉट हैविंग अ क्रिएटिव सेंस और क्रिएटिव टेस्ट कि कौन सा ग्राफिक्स अच्छा है, विच विल इम्पैक्ट फॉर माई सर्विस, माई पेशेंट्स, तो आप अल्टीमेटली कोई भी, अरे यार एक कोई भी कर दो ना यार, क्या फर्क पड़ता है? यू कैन नॉट डू दैट, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज योर ब्रांड कम्युनिकेशन and you are spending money for that. And media agency or media person is not a healthcare professional or healthcare provider. उसने तो ग्राफिक्स में कुछ अलग से क्रिएटिव या कोई विजुअल्स बनाया है विच माइट नॉट बी रिलेटेड टू दस योर सर्विसेज। यू माइट नीड टू चेंज कि नहीं भाई, ये ग्राफिक्स में ये ऐसे नहीं आएगा, ये किडनी 3 नहीं होती है, 2 ही होती है बॉडी में, तो आप उसको उसी तरह से देखो भाई, राइट? ये एक एग्जांपल है। यू नीड टू करेक्ट दैट पार्ट। कोई भी मार्केटिंग मटेरियल्स होगा तो डिजाइनर है तो वो अपने हिसाब से, उन्होंने जिस तरह से समझा है वैसे पुट अप करेगा, बट यू आर द सब्जेक्ट और एक्सपर्ट ना, एंड यू आर hospital leader, and you need to decide out of this 4 marketing material, you need to choose one which will be impact more to your audience, right? And that way there are multiple things in on your desk as a hospital manager or CEO. You don't think that you are right now a first year student and you will be doing a job of hospital administration only. Such kind of things will not be on your table. Why do you limit yourself? You think that after 5 years, 7 years, you might be heading a particular hospital, and where you will get such kind of situations. Next, negotiator, right? किसने बोला? Good. Negotiator. Good. Negotiation, very much important part of every leader. किसी भी लीडर की क्वालिटी वही है कि हाउ बेस्ट ही कैन नेगोशिएट द थिंग्स. इट कैन बी एनीथिंग. इट कैन बी यू आर रिक्रूटिंग अ डॉक्टर, सुपर स्पेशलिस्ट, टॉप मोस्ट डॉक्टर, आई मीन, तो आपको
आपकी हॉस्पिटल के लिए चाहिए, हाउ बेस्ट यू कैन नेगोशिएट, हाउ बेस्ट यू कैन नेगोशिएट इन अ परचेज, you know, how best you will negotiate for a particular situation or in a crisis with some government agencies, say with your team, right? So negotiation skills is must. और ये चीज को आप कहीं पे ऐसा थंब रूल नहीं है कि अच्छा ये कर लो तो नेगोशिएशन सीख जाओगे और नेगोशिएशन कर लोगे. Negotiation is you have to be there in that situation. You have to analyze multiple purchase orders, and then you will slowly develop such kind of negotiation skills. Okay, if we are negotiating for the laboratory equipments kind of things, I need to negotiate this way. There are different kind of discounts or different kind of things we can negotiate, right? So negotiator is a very much important role in hospital management or any kind of management. It's not only about hospital, but any kind of management. Next, 14, we still representative. You are representing your organization. Okay, it can be a role. इसको already कहीं पे cover किया होगा. We should not be repeat particular things. Representation or representative. एक minute, just let me check on this part. Yes, we can add as a separately representative. Thank you for this addition. Now it is 21st. I mean, not a 10, 20 roles. We have added on more role. Representative. Representative means you are representing your organization, right? You go to a conference, different meetings, you meet people in society, but you are representing a particular brand or organization, or where you might be on your own brand and you are representing it. So yeah, अगेन ये इसको आपको लीडर में कंसीडर करना है तो कर सकते हो, पर इट्स अ गुड, इसको कीप इट सेपरेटली. नेक्स्ट, और हाँ, टीम लीडर आ गया, ये रहा टीम लीडर. ऑडिटर, यस, यू आर ऑडिटिंग. ऑडिटर, ऑडिट करोगे. कौन कौन से ऑडिट करना आएगा हॉस्पिटल में? कौन सा? फ्लोर. हाँ, फ्लोर मतलब फ्लोर पे जितने भी रिसोर्सेज असाइंड है उसका आप ऑडिट, किसी भी चीज का आप ऑडिट कर सकते हो. देयर आर क्वालिटी ऑडिट्स, देयर आर मेडिकल ऑडिट्स, देयर आर फाइनेंशियल ऑडिट, अकाउंट ऑडिट्स, इन्वेंटरी ऑडिट्स, raw materials वगैरह etc. audits are you are the performance evaluation is again a kind of उसको आप evaluation बोलोगे पर audit नहीं कहोगे, पर but yes somewhat. हाँ, वहां पे आपका रोल डिफरेंट है एज ए एनालिस्ट, वो डिफरेंट हो गया, उसको आप ऑडिटर नहीं कहोगे. यहाँ पे ऑडिटर है या इवेल्युएटर है, दोनों आपको दे सकते हो, ऑडिटर और इवेल्युएटर, राइट? ये दोनों प्रोसेस में फर्क क्या है? ऑडिट, व्हाट इज ऑडिट एंड व्हाट इज इवेल्युएशन, दोनों में फर्क क्या है? बेसिक.
फंडामेंटल डिफरेंस क्या है? टू ऑडिट समथिंग एंड टू इवेल्युएट समथिंग. ऑडिट मीन्स आप एक स्पेसिफिक चेकलिस्ट या स्पेसिफिक पैरामीटर के अगेंस्ट में ऑडिट कर रहे हो. मेडिकल ऑडिट तो पर्टिकुलर मेडिकल रिकॉर्ड है, उसमें ये है कि नहीं है, यस नो यस नो यस नो, यू आर ऑडिटिंग. फाइनेंशियल ऑडिट मतलब ऑल दी प्रॉफिट एंड लॉस, ये मतलब जो भी पैरामीटर्स है, वेदर इट इज फुलफिल नॉट फुलफिल एक्सेट्रा. ऑडिट मीन्स on particular prescribed checklist, prescribed parameters, you are checking whether it is yes or no or kind of things, right? And evaluate means you are evaluating one particular thing as compared to second. There is no any prescribed format, but you are applying your sense, your knowledge. For example, you got two doctor profiles and out of that you need to recruit one person. So you will evaluate doctor 1 and doctor 2. ओके, इसकी डिग्री क्या है, इसका डिग्री क्या है, इनका एक्सपीरियंस क्या है, हाउ मेनी सर्जरीज, किसने कितनी सर्जरीज की है, कौन से इंस्टीट्यूट से पास आउट है, अच्छा इनका लॉन्ग टर्म प्लान क्या है. आप इवेल्युएट कर रहे हो दोनों प्रोफाइल को एंड देन यू आर डिसाइडिंग ओके द डॉक्टर 1 इज राइट फॉर माय हॉस्पिटल, आई विल फर्स्ट अप्रोच डॉक्टर 1 offering and you will go for that, right? That's the evaluation. You are not auditing a particular person, but you are evaluating two profiles. यहाँ पे एक और आपने जो बताया एनालिस्ट. एनालिस्ट मतलब you are analyzing a data, you are analyzing a particular quality of an equipment, a kind of analysis. Mainly analysis are based on data, like quality indicators, like business analysis, based on how many OPD patients across different specialty, how many surgeries, what all are different surgeries, numbers, revenue data analysis. There are multiple things. Analyst, where you are performing a role of analyst. Then हाँ, कंटेंट राइटर आ गया अपना, ये रहा, यही ना, राइटर, कंटेंट राइटर, इनोवेटर और क्रिएटिव पार्ट. सेकंड इसी के एक रिलेटेड एक है, वो है रिव्यूअर. इवेल्युएटर और रिव्यूअर और ऑब्जर्वर, वो था डिफरेंट. एज ए रिव्यूअर और ऑब्जर्वर, you are going to observe or review a different SOP or policy on ground. जैसे हमने एक एग्जांपल देखा, जो परफॉर्मेंस इवेल्युएशन SOP we have tried to implement, it was end up with a different sense and different way, right? So unless you don't review it, you will not get the right things what is happening on ground. आपको रिव्यू डिफरेंट वे में करना पड़ेगा. व्हेन यू आर इन अराउंड, यू इंटरेक्ट विथ डिफरेंट इंडिविजुअल्स, यू इंटरेक्ट विथ नर्सिंग इंचार्ज, you get a review. Okay, we have recently implemented this SOP, what is your review, how it is working, कहीं पे gap है, can we improve it, can we change it, can we what things you are. And also you need to observe it, observe at your own, that after implementing this SOP, are we getting the right outcome or not, right? So that way it's a different role as compared to evaluator and auditor, right? Next, और कुछ?
एक है मार्केटर. No matter what level you are working in a hospital, by directly or indirectly, you are doing marketing of your hospital. You are suggesting in your family, in your friend circle, oh, I need to consult this particular specialist. Oh, we in our hospital there is a new doctor. He is visiting. He is performing good surgeries. You can consult him. Right? But you are performing a marketer of your hospital there. And you also always you need to think about the marketer as a marketer. How will you do marketing of your hospital services, etc. So, anyways, directly or indirectly, whether you've been given that designation or not, you somewhere in your duties you need to be act as a marketer, right? And last, signatory authority, very much important. You are performing a role of signatory authority. There are multiple documents you are going to sign after, you maybe you are as a executive, as a manager, CEO, CEO, whatever the position, you are going to sign as per your authority. But whenever you sign it, that means you are responsible for that. You cannot miss out basic things before sign out. So you will be a signatory authority also, right? कोई हॉस्पिटल एम्प्लॉय आएगा, सर ये ब्लड टेस्ट करवाना है सर, फ्री का साइन कर दो ना सर, तभी वो लेबोरेटरी वाला लेगा. कल को in your as a executive or manager, you're working in a hospital and you got a call from some government authority or a health department. See, our so and so department officer or our commissioner is going to visit to consult this doctor and all. So what? Why he is calling you? Because you need to take care the part, right? You cannot, there are, you need to arrange a particular things. Or there are some celebrity is going to visit your hospital. Obviously, you are taking that leverage for your marketing rather than charging him 1000 rupees of OPD consultation fees, right? But account department wants, अरे ये इस सेलिब्रिटी का 1000 ओपीडी कंसल्टिंग फीस क्यों फ्री किया है? Who has assigned it? So at that time you need to sign it. See, this is a celebrity, we have leveraged a marketing part. You need to make a remark in that particular bill and signed to waive off that particular bill. Because after 1 year, the account department at the time of audit, it will come, this 1000 rupees approval given by so and so person. Now you don't know after one year, will you be able to recollect? Okay, वो 1000 रुपये ये किसका मैंने साइन किया था? Maybe there may be, it is not about OPD charge or a laboratory charge. Maybe some of the meeting you need to arrange, and for that you need to arrange high tea arrangements and all. You need to call the canteen and come and send me that part. But canteen वाला लिख के तो आएगा ना bill. Sign कौन करेगा? You as an organizer. As an organizer, you are there and you are signing the bill of organizing that meeting and things part, right?
पर वहां पे आपको अब किसके लिए आपने वो किया है, दैट एटलीस्ट एज ए साइनिंग ऑथोरिटी, इफ यू आर वेविंग ऑफ एज अ बीइंग अ ultimately manager or CEO, he is an employee of a hospital, he is part of the system. So for that, what things you have approved, you have waived off these bills, you just put a remarks and then sign it. So after a 1 year in audit, if something comes up, you just need to ask, okay, show me that receipt. You might have remarks, so and so meeting with this particular authority, as per discussion and approved by CEO telephonically, I'm signing it. That's it.